This conference will now be recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अली मौला अली सुल्तान मोहम्मद शाह अली। 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 हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। काज़ियुल हाजात नामत या अली मुश्किल कुशा। 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 काज़ियुल हाजात नामत या अली मुश्किल कुशा।
काज़ियुल हाजात नामत या अली मुश्किल कुशा 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 अल-हय्य अल्लाहुम्मा लक सुजूदी व तौती शुक्रन लिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह शुक्रन लिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। या अली मदद, या अली मदद, बहुत शुक्रगुजारी या अली तमाम मदद। साथियों को, या अली मदद, तमाम साथियों को या अली मदद। Thank you for joining us this morning. Inshallah, we will move and we are almost coming to the end of this chapter on Imam Shanasi. Let's ask for Imam's help so we may be able to walk on this path with his light, with his nur, with his guidance. Nur Maulana Shah Karimul Husaini Hazir Imam, Hazir Imam, Ya Maulaye Mehrban Madad Farma, Ya Maulaye Mehrban Madad Farma, Ya Maulaye Mehrban Madad Farma, Madad Farma. Nur Maulana Shah Karimul Husaini Hazir Imam, Ya Maula Tawfiq ताईद हिम्मत व यारी मौला, तौफीक ताईद हिम्मत व यारी मौला। या मौलाए मेहरबान, हम गरीबों की मदद फरमा मौला। या मौला अपने नूर से हमारी मदद फरमा मौला। या मौला हमारे करीब आ जा मौला, अपना दस्त मुबारक हम गरीबों पर रख मौला, ताकि तेरे नूर की रोशनी में, तेरी हिदायत से मौला हम इस इल्म को सुन समझ और उस पर अमल कर सके मौला। या मौलाए मेहरबान मदद फरमा मौला, मदद फरमा मौला। तमाम साथियों को एक बार फिर या अली मदद, and thank you for joining us. We had end our previous session with a question. हमने अपना पिछला सेशन एक सवाल के साथ रोका था, जहां पर पूछा गया था कि हम इमाम को किस तरह से देखते हैं। How do we see Imam? And we had read this line of Farman, which is the very first Farman of Imam Aga Sultan Muhammad Shah Sabatullah Alayhi. May our soul be sacrificed to that Imam. Where Imam says, "Hey Jamato, do not consider me small. I am the descendant of Prophet and Hazrat Ali
Amirul Momineen was my great grandfather. Hazrat Bibi Fatima Khatun Jannat was my great grandmother. I am the Noor of Ali and Nabi both. I am young in age, but my status is high. And the question was put forward, how do we see Imam? And this is where our chapter continues. Now make sure you recognize the Imam of the time. Not only that, but make good friend with him. Make good friend with him. Come closer to him, to his hidayat, to his farman. Recognize him, understand him. How do you see the Imam? That is the question for the day. Do we see him as merely a human like you and me? He does look human just like you and me. What are the attribution of a Imam versus someone Garib like us? The example Pir Nasir Khusro gives of the bamboo stick and sugar cane. On the surface, the bamboo stick and the sugar cane look just alike. But what a huge difference in those two. Bamboo stick hollow from inside. That is the example of us Garib and Nachis. And the sugar cane, full of sugar, heavy, in the example of the Imam Zaman, full of Noor, ilm, and wisdom. But on the surface, they both look the same. How do we see Imam? We have 4 ways with which we can see him. You pick how you see Imam. As an individual with free will, intellect, we pick how do we see him. Do we see him as a human only? Do we see him as an intercessor between us and Allah? Do we see him as a Noor-e Allah? Or do we see him as Ali, Allah himself? How do we see him? The answer rests with you individually. The Farman goes further. Now make sure you recognize the Imam. That is the invitation. Dawat. कि हमको इमाम को पहचानना जानना है. Now make sure that you recognize the Imam. And this Farman, not only Mullah Ali has given us, not only
Imam Muslim Sibillah in Pir Pindiyaz Jawamardi has given us. Matter of fact, every Imam of every time have put this command, Farman, in the front of the Mu'mineen of their respected time by saying, make sure you recognize the Imam of the time. Hazir Imam also have given us few of the Faramin with the same word. It is fundamental principle of our tariqah that you recognize the Imam of the time. ये असूल दीन है कि आप अपने जमाने के इमाम को पहचाने. That is a core principle. As an Ismaili, we must recognize the Imam of the time. So Mullah says, make sure you recognize the Imam of the time and make good friends with him. Have love in your heart for your Imam. Second condition. After you recognize him, have love for your Imam in your heart. Third condition. Do good deeds. We have talked about good deeds in our other session on good deeds. Good deed starts with Iman, faith, recognition of the Imam, purity of the heart, intention, correct intention on what you are doing. If your intention is correct, if your recognition of the Imam is correct, if your Iman is firm, then you will be able to do good deeds as Imam will guide you. Imam will guide you what are the good deeds in our time, in our respected places, wherever we may live, because Imam is the one who teaches and show us the true path. And therefore, we must recognize the Imam of the time correctly and keep love in our heart for him and do good deeds. Never talk or do bad for anyone. Condition number 4, no gossiping, backbiting, talking ill of others. That's the condition of recognizing the Imam. And you can see Imam has put clear expectation, conditions on whom? Mu'mineen, on the believers. यहां पर हमने देखा कि इमाम ने क्या हुक्म फरमाया है और उसके साथ क्या क्या शरायतें रखी है कि जब आप इमाम को जानने और पहचानेंगे, और जरूरी है कि आप जमाने के इमाम को पहचाने और अपने दिल में उसके लिए प्यार रखें. पहली कंडीशन, पहली शर्त. दूसरी, उसके साथ अच्छे आमाल करें. अच्छे आमाल का दारो मदार हमारे ईमान पर रखा गया है. अगर हमारा ईमान मजबूत है, इमाम के ऊपर हमारा ईमान करेक्ट है, दुरुस्त है, तो हमारे आमाल भी दुरुस्त हो गए, क्योंकि इमाम ही है
जो हमको जमाने और वक्त के लिहाज से क्या करना है उसकी दौरवानी देता है। उसके बाद चौथी शर्त रखी गई कि आप किसी की भी बुराई गिला गिबत नहीं करेंगे। If someone is bad, leave him to Allah, even if he speaks ill of you. अगर कोई बुरा शख्स है आप उसको छोड़ दें, अल्लाह उसका जिम्मेदार है, आप नहीं। यहां तक कि अगर वो आपके बारे में बुरी बात करता है तो भी आप उसके बारे में बुरी बात नहीं करेंगे। Leave them to him even if he speaks ill of you or me. If they speak ill of Imam, even then do not speak ill of them. That is the conditions Imam has put. The next condition, do not do any bad deeds. Next condition क्या रखी कि बुरे कामों से दूर रहें। He will pay for his action. Remember, this is the sign of nobility. जो बुरे लोग हैं उसका अजर उनको मिलेगा। आप खामोश रहें, कभी भी किसी के बारे में बुरी बात ना करें, गिला गिबत ना करें, तोहमत ना लगाएं। Keep your thoughts to yourself. Do not speak bad for others, even if they speak bad about you or even Imam. Do not do bad deeds of gossiping and slandering. Those who do that, they will pay for it. You keeping to yourself is the sign of a momin. आपकी निशानी यह है कि आप मोमिन हैं क्योंकि आप गिला गिबत और तोहमत नहीं लगाते हैं। You do not gossip, you do not speak ill of anyone, and that is your sign that you are a momin. If you are involved in gossiping and slander, Nozbillah, you cannot be amongst the spiritual children, amongst the mu'mineen, because that is absolutely against the conditions Imam has put on us to be a mu'min. My friends, my brother and sister, my young ones, be careful. Be careful in your deed. Now, Mullah further says, and this is, like I said earlier, almost end of the Imam Shanasi. Those of you who would like to move forward, pay attention to this paragraph now. This is the last period. ये दौरे आखिर है, ये दौरे क़यामत है. And whoever has true faith in Imam will see the miracle and impressive event in his time by the Imam Zaman. And those who have half-hearted faith, they will witness the miracle but will not believe in them. मौला फरमाते हैं ये दौर आखिर है और आप में से जो ईमान वाले हैं वो जमाने के इमाम के माजिजात को देखेंगे और उस पर ईमान भी लाएंगे, और जो अधूरे दिल वाले हैं वो भी देखेंगे
यकीन नहीं करेंगे। Those who have a complete faith in the Imam Zaman, they will see the miracles of the Imam Zaman and they will believe due to their faith, Iman in the Imam Zaman. Others will also will see because they have a half-hearted Iman, उनका ईमान कच्चा है. They will see but they will not believe. They will not believe. This is the chapter above and after Imam Shanasi, where one can learn what are those miracles Imam speaks of. Are those miracles physical, spiritual, or intellectual? As human, as a murid, as a mu'mineen, as a follower of the Imam, we are living three stages of life. One is physical, temporary. Second is spiritual, with the soul, permanent. And third, with the intellect, which guides the soul and the physical both. And we should be able to see and understand the miracles of the Imam of the time if our Iman is firm. चूंकि हमारी जिंदगी तीन दर्जात पर है, ये माजिज़ात जिसकी इमाम बात करते हैं वो ऊपर का आला दर्जे का इल्म है जो इमाम शनासी के बाद आता है, और हम में से वो जो ईमान के अंदर मजबूत है वो मौला के माजिज़ात को देखेंगे. कहां कहां पर? जिस्म के मकाम पर जाहिर में देखेंगे, रूह के मकाम पर बातीन में देखेंगे, अक्ल के मकाम पर इल्म व हिकमत के दर्जे पर देखेंगे और ईमान भी लाएंगे. और जो अधूरे दिल वाले होंगे, दोज विद हाफ हार्टेड, वो भी माजिज़ात को देखेंगे. दे विल ऑल्सो सी द मिरेकल, मगर ईमान नहीं लाएंगे, उस पर यकीन नहीं करेंगे. दे विल सी बट दे विल नॉट बिलीव. Imam further says, whoever has believed the miracles and events of Nabi and Imams are like blind individual who cannot see. Whomever has not believed, those with half-hearted, have not believed in the miracles of the Nabi and the Imam, they are the one with half-hearted, as they are blind. They are blind to these miracles because those miracles are all around us and inside us. और वो जो ईमान में अधूरे हैं वो इसलिए इन माजिज़ात को नहीं देख पाते हैं क्योंकि वो अंधे हैं, जबकि माजिज़ात उनके अतराफ में भी है और उनके अंदर भी है. उनके अतराफ में भी है, उनके अंदर भी है, मगर चूंकि उन्होंने अपनी आंखें अंधों की तरह बंद करके रखी है, वो ना तो बाहर को माजिज़ा देखते हैं,
ना कोई अंदर माजिजा देखते हैं, because they have closed their eyes to these miracles. They do not see the miracle outside nor inside. If you give blind man a mirror or a flat piece of stone, for him both are same. People with half-hearted faith think we are common men like them. Do you remember the question? How do you see the Imam? Do you see him as merely a human? Do you remember that question? If you see the Imam as a human like you and me, Imam is explaining who you are. If you give blind man a mirror or a stone, a flat piece of stone, is same for them. People with half-hearted Iman will see the Imam as a common man like them. Does this need any explanation? वो लोगों को जो आंखों से अंधे बने हुए हैं, अपनी आंखें बंद की हुई है, उनको आप शीशा दें या ठिकरी, उनके लिए बराबर है, क्योंकि वो अधूरे दिल वाले हैं, वो इमाम को अपने जैसा इंसान समझते हैं। क्या अब कोई सवाल बाकी रहा कि हम इमाम को किस तरह से देखते हैं? Think about this question and think about this line of Farman. Momino, my friends, my brother and sister, inshallah, you have firm belief in Imam Zaman. Your Iman is intact and firm without any doubt, inshallah. अगर आपका ईमान मजबूत है, अपनी जगह पर कायम है, तो आपको इस सवाल में कोई दुश्वारी नहीं होनी चाहिए कि इमाम कौन है और उसकी पोजीशन क्या है और हम कौन है और हमारी पोजीशन क्या है। हम कभी भी ये गलती नहीं करेंगे कि इमाम को अपने जैसा इंसान समझे। Mullah further says, in the world, I present myself as a darwish, but my status is very high in batin. दुनिया में मैं अपने आप को दरवेश जैसा रखता हूँ, दिखता हूँ, लेकिन मेरा दर्जा बहुत बुलंद है। I am the descendant of Prophet Muhammad. भूल नहीं जाना कि मैं आले नबी औलादे अली नूरन अला नूर हूँ। Don't forget that I am from the progeny of Muhammad and Ali, Nuran Allah Nur, Imam. Don't forget that. The dignity and importance of our house is only understood by the wise and knowledgeable. If you are not able to understand and answer this question, how do we see Imam? The reason is that only those who will understand and they recognize the Imam and be able to answer this question, how do we see Imam? Because they are the one who have understood the Imam and they are the one with the ilm and hikmat.
If you don't have the ilm of the Imam, we are talking about Imam Shanasi. If you don't have an ilm of Imam and the wisdom in the Imam Shanasi, you will never be able to recognize the Imam. So what do we need to do? Ilm, 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 ilm. इल्म वाली रूह दर्जा ब दर्जा ऊपर चढ़ती है. So what do we need to do? Learn, 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 learn. Because it is only the soul with knowledge which will rise. And they are the wise one. वो हिकमत वाले लोग हैं जो इल्म के जरिए से इमाम को पहचान लेते हैं. Again, we are talking about Imam Shanasi. Remember, don't forget, we are talking about Imam Shanasi, the recognition of Imam. Don't forget that. The people with half-hearted faith will not trust us at all. In other words, those who have a faith on Imam, they put their trust in Imam. Those who have a half-hearted Imam, they will never put their trust in Imam because they cannot see how Imam is guiding them and taking them to the closer and closer to the Nur-e-Ilahi. Because they have a half-hearted Iman, they do not put their trust in Imam. They, matter of fact, trust themselves, not the Imam. They think they are better than Imam, so they put their trust in themselves. When a Mu'min says, I am nothing, and they put their trust in the Imam-e-Zaman by saying, Ya Mullah, I am nothing, you guide me. You guide me with your nur. You guide me with your wisdom. You guide me with your ilm. Ilm-e-Zahir and Ilm-e-Batin, you guide me. Those are the people with the ilm and they are the wise one. They hurt themselves when they don't put their trust in the Imam. What do they do? Because they put their trust in themselves, they hurt themselves. Because they're supposed to put trust in the Imam. In Surah Furqan, Surah number 25, ayat number 58, Ali Allah says to the Muhammad, Hey Rasul, put your trust in Al-Hayy, the Imam-e-Zaman, the one who never dies. That is the guidance and the farman for us in the Quran. Put your trust in the Imam-e-Zaman as he never dies. Look it up, Surah 25:58. So you know who you should put your trust on. What are the lessons from this farman? There are 6 lessons that we learn from this farman today. We're going to recap the lesson that we learned from this farman. 6 principle. हमने इस फरमान के अंदर से 6 कुलियात को समझा, 6 कुलियात को लिया और समझा. 6 keys or the 6 key principle that we learned from this farman. Principle number 1. Imam are Nuran Allah Nur Imam. Father to son. The continuation of the chain, the light of Imamat. Generation after generation. The principle of
Nuran ala Nur. Imam after Imam after Imam, generation after generation, father to son, father to son. Second principle, that Mu'mineen must recognize the Imam of the time. Third principle, that we have entered the Dore Qiyamah, Dore Akhir. So then we must understand what is Dore Akhir, time of Qiyamah. हमने 6 असूल दीन सीखे इस फरमान से। पहला असूल था कि इमाम हमेशा नूरन अला नूर इमाम होता है, यानी कि इमाम के बाद इमाम के बाद इमाम के बाद इमाम, बाप इमाम बेटा इमाम, प्रोजनी के बाद प्रोजनी, इमाम के बाद इमाम, इमामत चलती रहती है, कभी भी खत्म नहीं होती है। दूसरा कि हमेशा इमाम की शनाखत में रहना। तीसरा कि हम दौरे क़यामत के अंदर दाखिल हो चुके हैं, तो अब हम पर फर्ज है कि हम क़यामत के ज़माने के को पहचाने और क़यामत के ज़माने के इमाम को पहचाने। ये दावत है आगे इल्म सीखने की। The principle number 4. In this time, in the Dore Akhir, everyone will see the principle. The fourth point was, because this is the time of Qiyamah, everyone will see the miracles. The understanding of miracle are A, B, and C. Physical miracles, the change in front of our eyes. Spiritual miracles, and the changes in the way Imam gives Isme Azam. And third, what changed physically और spiritually. नुक्ता नंबर 4 जो आज हमने सीखा वो ये था कि दौरे आखिर में होने की वजह से, चूंकि हम दौरे क़यामत में दाखिल हो चुके हैं, हमारे सामने माजिज़ात होंगे। वो ज़ाहिरी माजिज़ात होंगे जो हमारी आंखों के सामने होंगे, वो बातिनी माजिज़ात होंगे जो इसमें आज़म के जरिए से हमारी रूह के साथ होंगे, और ये माजिज़ात हमारा ज़ाहिर भी बदल देगा और हमारा बातिन भी। प्रिंसिपल नंबर 5, blind not with eyes but of the heart, intentionally closing ears, eyes and heart. What we learn, that there are who are in the name call themselves Ismaili, but they have closed their hearts, they have closed their eyes, and they have closed their ears to the Imam's farman. They do believe, they do say, they have enrolled themselves as Ismaili. Remember, this farman is not for the others. This farman is for you and me as Ismaili. So there are those amongst us who have intentionally, जानबूझकर अपने कानों को इमाम के फरमान से रोका हुआ है, अपनी आंखों को इमाम के माजिज़ात से रोका हुआ है, और अपने दिल को इमाम की हिदायत से रोका हुआ है। They have closed their eyes to the miracle of Imam, they have closed their ears to the faramin of the Imam, and they have closed their heart from the guidance of the Imam.
and they are amongst us. We learned there was principle number 5 that we learned from this one Farman. The last and the sixth principle, and there can be many more if you pay attention to the Farman. One with the faith are with the eyes, and one without the faith are blind. So we learn that if your Iman is intact and firm, you will see the miracle. You will understand the Farman, and you will let the guidance of the Imam come into your heart. Other word, you will let the Noor guide you. असूल नंबर 6 कि जो ईमान वाले होंगे वो इस जमाने में अपनी आंखों से इमाम के माजिजात को देखेंगे, इमाम के फरमान को सुनकर समझकर उस पर अमल करेंगे और इमाम की हिदायत को, उसके नूर को अपने दिल में जगा देंगे। ये 6 असूल हमने इस फरमान से समझे। Let's look at one of the ayat. And this ayat is directly related to this farman above. That on the day of Qiyamah, remember we are already in the day of Qiyamah, you will see some mu'mineen, they will be radiant because of the nur of the Imam will be shining on their faces, on their forehead, in their heart. Their faces will be radiant. चूंकि ये क़यामत का ज़माना है, इस आयत को ऊपर के फरमान से हम देखते हैं कि इस ज़ोरे क़यामत में आप कुछ मोमिनों को देखेंगे जिनके चेहरे चमकते होंगे इमाम के नूर से, क्योंकि उन्होंने इमाम को पहचाना होगा, उन्होंने इमाम पर ईमान लाया होगा और उनके चेहरे रोशन होंगे इमाम के नूर से, क्योंकि उन्होंने अपने दिल में इमाम के नूर को हासिल किया होगा। Don't be like those who, after have given the clear signs, ayat, revelation, splits into the factions and fall into the dispute. A terrible punishment await for them. ए ईमान वालों, ईमान लाओ, अधूरे दिल वाला ना बनो, जबकि आपके सामने वाज़े निशानियां हैं, इमाम और क़यामत की निशानियां हैं, और मजहब के अंदर फूट ना डालो, पारे पारे ना हो जाओ, इमाम पर मजबूत ईमान लाओ, वरना आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान है। On the day when some faces brightened and other darkened, अगर आपका ईमान मजबूत है, आपके दिल में इमाम का नूर है, तो आपका चेहरा इमाम के नूर से रोशन होगा। आपका ईमान अधूरा है तो आपके चेहरे पर भी और आपके दिल में भी अंधेरा होगा। ये मैं नहीं कहता हूं, आपके सामने आयत का रेफरेंस है, आप खुद जाके पढ़ लें। On the day when some faces brighten, other darken, it will be said to those with the dark faces, how could you reject your faith after believing? किसकी बात हो रही है?
उस दिन आप देखेंगे कि जिनके चेहरे बुझे हुए हैं, उनके दिल में इमाम की रोशनी नहीं है। उनसे पूछा जाएगा कि क्या वजह थी कि तुम तो इस्माइली कहते थे अपने आप को, और फिर भी ईमान नहीं लाया इमाम पर, इमाम को पहचाना नहीं। क्या वजह थी कि तुमने अपने दिलों को बंद कर लिया था, अपनी आंखों को बंद कर लिया था, अपने कानों को बंद कर लिया था और अंधे बन गए थे, जिसकी वजह से इमाम का नूर ना तो आपकी आंखों में आया, ना आपके कानों में आया, और ना ही आपके दिलों में आया। क्या वजह थी भाई? वेरी पावरफुल स्टेटमेंट। डोंट बिलीव मी, read for yourself. What was the reason that you rejected the faith? What was the reason? Test and torment for doing so. आपके लिए एक बहुत बड़ी सजा होगी, रूहानी और अकली, क्योंकि आपने इमाम का नहीं जाना और इस पर ईमान नहीं लाया। Be careful of that. I know you are one, inshallah, with a full faith, full firm iman on the Imam of the time. My brother and sister, be careful. अपने ईमान को संभाल के रखें, मजबूती से पकड़ के रखें, ताकि कोई आपके ईमान को लूट न ले जाए। Be careful. But those with the brightened face, with the Nurani face, will be in God's grace there to remain. और जिनके चेहरे रोशन हो गए इमाम के नूर से, वो तो इमाम की रहमत में इमाम के साथ हमेशा हमेशा रहेंगे। आमीन। The last chapter, and we will end with this, because we just read this Quranic ayat. What does Imam say about this ayat? It is important that if you recite or know parts of the Quran, you should be able to explain their meaning, as you just saw a second ago. Don't forget that our branch of Islam is esoteric branch of Islam. Esoteric means that what is written is there, but the meaning is not there to everyone. It is there only for those who are part of our Jamaat. It is important, therefore, that if you learn part of the Quran, you should be able to explain the esoteric meaning of those parts. ये जरूरी है कि अगर आप कुरान पढ़ते हैं तो आप उसके माने को जाने और उसको दूसरों के लिए बयान कर सकें। और भूल नहीं जाना, हमारा तरीका इस्लाम के अंदर बातिनी तरीका है, और बातिनी तरीका होने का मतलब यह है कि जो लिखा हुआ है उसका बातिन हमारे लिए है, और चूंकि ये हमारे लिए है तो आप उस तरह से इन आयतों को देखें और समझें और उसको दूसरों के लिए भी बयान करें। क्यों? कि ये हमारे बातिनी तरीके के लिए है। आप इन आयतों को जब पढ़ें तो समझ के आपके अंदर इतना ईमान होना चाहिए कि आप उसको ईमान के साथ बयान कर सकें, इमाम के नूर की रोशनी में बयान कर सकें। Further, Mola says, it is important that in learning part of the Quran, you must clearly understand the meaning. Clearly understand the meaning.
Yesterday we had a session on the interpretation, the Tawil of the Quran. If you were there, you saw how your understanding of the Quran should be clear. No doubts, clear. It is important that in the learning of the part of Quran, you must clearly understand the meaning. If you recite part of the Quran, certain words must represent to you a concept. If you study the Quran Sharif, this concept will become well known to you, and through you to the Jamaat in large. This takes many years of study. I don't want you to think that this can be learned easily or without hard work. मौला फरमाते हैं कि जब आप कुरान को पढ़ें तो आप उसके मानी को वाज़े तौर पर समझें, ताकि वो कुरान के अल्फाज और आयत आपके लिए बिल्कुल वाज़े हो, उसमें कोई शक और शुबा ना हो। अगर आप नाचीज के साथ कल थे तो हमने कुरान और कुरान की आयतें और कुरान के कुछ अल्फाजों की तावील के ऊपर रोशनी डाली थी, और इस तावील के अंदर कोई भी डाउट, शक नहीं होना चाहिए, वाज़े होनी चाहिए। अगर आप इस आयतों को, इन अल्फाजों को समझते हैं तो फिर आपके जरिए से, इमाम नहीं, आपके जरिए से ये कुरान की मायने, बातीन, तावील जमात को मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि ये आसान काम है, उसमें मेहनत करनी होगी आपको और उसको सीखना होगा, ताकि आपके जरिए से जमात को फायदा पहुंचे इंशाल्लाह। प्लीज रिसाइट द होली सलवात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। This is the end of our session here. Let's open the floor for any comments, any question, anything you like me to repeat back in English, और कुछ आप चाहते हैं कि मैं दोबारा से उर्दू में बयान करूं, तो अब आपके पास मौका है, आप पूछ लें। He says, Subhanallah, sir, Subhanallah. Friends, you can share your questions in the chat, or you can unmute your device or use the hand raise feature to ask questions. Okay. Sir, we don't have any question in the chat at this time. आपके पास मौका है, आपको जो भी समझ में नहीं आया है आप पूछ लें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो आपको बताई गई जो खुल्लम खुल्ला नहीं बताई गई थी। आप पूछे जी। याली मदद सर। सर, आप जब ये एक्सप्लेन कर रहे थे ना कि 3 मिरेकल्स, फिजिकल और स्पिरिचुअल, तो स्पिरिचुअल में आपने बोला कि इसमें आजम से इबादत में पता चलेगा, लेकिन फिर इंटेलेक्चुअल आप नहीं समझाए सर। सॉरी। नो प्रॉब्लम, गुड क्वेश्चन। इल्मी माजिजात को आप देखेंगे, क्या आपने अभी अभी एक इल्मी माजिजे को नहीं देखा कि हम जैसे गरीब और नाचीज जो पढ़े लिखे भी नहीं है, कोई बड़े अलवाइज भी नहीं है, कोई दाई और हुज्जत भी नहीं है, और वो कुरान की आयतों को आपके सामने खुल खुल कर बयान करते हैं, क्या ये इल्मी माजिजा नहीं है? My sister asked, what are the intellectual miracles of the time of Qiyamah? My question to her was, did you not see intellectual miracle just a few seconds ago, where someone Garib and Nachiz, nobody can openly recite and give the understanding of the Quranic ayat
Isn't that an intellectual miracle? That is the ilmi miracle of the intellect. That in the time of Qiyamah, if you keep your eyes open, you will see physical miracles, spiritual miracles, and intellectual miracles of the ilm from those who are nobody, who has no title ALWAAZ, who are not scholars, who are not dais, who are not peers. They are nobody, but they are able to give clear understanding of the ilm, farman, Quran, ayat, etc. Isn't that an intellectual miracle? Did you not see that? Gee, very beautiful question. Thank you for asking. Don't be shy. Ask. Yari Madad, sir. Ya Ali Madad. I just wanted to ask, 3 universities in one Imam's time and the beautiful Institute of Smiley Studies. Would that be an example of intellectual miracle? It could be. What is what majiza means? Dr. Saab has asked a beautiful question. Again, your answer with a question. What does miracle, the word majiza means? Word majiza means that you see something but you are unable to repeat. यानी कि माजिजा कि जिसमें आप आजिज आ जाएं. You will see the miracles that you will see, but sometimes not able to understand, nor you are able to repeat that miracle for yourself. That is a miracle. So now the question back to you. Are those the signs? Yes. Are those miracles? No. Are those signs? Absolutely. Absolutely, those are the signs of Ali Allah at the time of Qiyamah. Miracles, no. Why no? Why those are not miracles? Because for the miracles, no one else can repeat. No one else able to understand how this is happening. How this is happening. Because what they are doing, we are able to see, we are able to understand. So it's not a majiza. We do not become ajiz due to those work. Those are signs? Yes, absolutely. Thank you. Gee, you're welcome. Any other comments or question? Gee. सर एक क्वेश्चन. सर आपने बोला कि दौरे कयामत स्टार्ट हो चुका है, तो अपने को इमाम ऑफ कयामत को अपने को पहचानना है. तो मतलब हाजिर इमाम ऑफ द टाइम हम बोलते, तो हाजिर इमाम को हम इमाम ऑफ द कयामत भी बोल सकते. आप बोल सकते हैं अगर आपने उसको पहचान लिया है तो. यही मौला फरमा रहे हैं कि जब आप दौरे क़यामत में हैं तो पहले क़यामत को देख लें कि क़यामत क्या है. अगर आप उस क़यामत को जान लेंगे तो आप क़यामत के जमाने को इमाम को भी पहचान लेंगे. लेकिन पहले जानना होगा ना ताकि हम पहचान सके. नाचीज ने एक की वर्ड बयान किया थोड़ी शुरू के अंदर कि याद रखें कि ये इमाम शनासी है, उससे ऊपर भी बहुत सारा इल्म है. अगर आपको जानना है तो उस इल्म को हासिल करें. जी. और सर जैसे ऐसा है ना कि अजाजिल को ने कहा कि मुझे इतनी एज देना कि मैं कयामत तक सब बंदों को मैं भटका सकूं.
तो मेरे दिमाग में हमेशा आता है कि अभी कयामत का दौर आ गया है, तो फिर अजाजिल खत्म हो जाना चाहिए। ओके, तो ये कैसा आप समझना सर? बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे। आपकी नजर में क़यामत क्या है, इमाम की नजर में क़यामत क्या है, दो अलग अलग बात हो रही है। इमाम जब कहता है क़यामत तो वो और कुछ कह रहा है, हम फरमान को नहीं समझ रहे हैं। और जब हम देखते हैं क़यामत को, सोचते हैं, तो शायद हम कोई ज़ाहिरी क़यामत को देखते हैं और समझते हैं, क्योंकि हमने क़यामत को नहीं समझा। अभी नाचिज़ ने क्या अर्ज की 2 मिनट पहले मेरी बहन, आपको क़यामत का इल्म सीखना है तो आपको आगे जाना होगा, ऊपर जाना होगा, दूसरे इल्म हासिल करना होगा, तब आप समझेंगे कि कौन सी क़यामत आएंगी और कब अज़ाज़िल का खात्मा होगा। मैं आपको मिसाल दे दूं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हर इंसान के साथ एक शैतान है। लोगों ने पूछा, या हुजूर क्या आपके साथ भी शैतान है? हुजूर ने फरमाया, हाँ था, लेकिन चूंकि मेरे पर क़यामत आ गई तो मेरा शैतान खत्म हो गया बेचारा, क्योंकि उसकी मोहलत खत्म हो गई, अब वो मेरे साथ मुसलमान बन गया है। आप समझ गए आपके सवाल का जवाब? जी हाँ सर, लेकिन अभी कयामत के बारे में और सीखना है सर इंशाल्लाह। प्लीज इंग्लिश में। आप देखें, आप सीख सकेंगे इंशाल्लाह, ढूंढे आप। जी इंग्लिश में समझाएंगे प्लीज? yes, absolutely. थैंक यू। My sister had asked a wonderful question that she understood and heard, that the Iblis was given, the Shaitan was given a time limit, that when the Qiyamah will come, he will lose his limit and he will be no more. If according to the Farman of the Imam Aka Sultan Muhammad Shah, Salawatullah alayhi, may my soul be sacrificed to the Imam, if this is the time of Qiyamah, then how come Shaitan has not lost his limit, his time limit? My answer to her was, is the easy question and easy answer. As when you think of the Qiyamah, and when Imam says this is a time of Qiyamah, we are talking about two opposite things, because we are not understanding the Qiyamah, nor we are understanding the Farman. Nor we are understanding the Farman. If you have understood the Qiyamah, then you would have understood that Iblis is no more. And then I gave an example of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. One time he said that every human has an Iblis with him. The Jamaat at that time asked, Ya Huzur, do you have Iblis with you? He said, of course there was one with me, but due to the Qiyamah, he is no more. His limit has ended. Now he have become a Muslim with me. I have no Iblis, Shaitan with me, because I went through the Qiyamah. And after the Qiyamah, the time of the Iblis is no more. Is gone. So my question to her was, did you understand what I just said? Are you paying attention to the words? If you wanted to learn about the Qiyamah, then you must enroll yourself in those classes which teaches you about above the Imam Shanasi. We are almost at the end of Imam Shanasi here. G. Sir, there's a, I think friends probably wants to confirm something. So she said, we used to recite Farman like a newspaper, but now
with the Mawla's ilm, we understand that the ilm of Farman of Mawla. Is this a miracle? That now we understand. Absolutely. Yes. If you are started or begin to start to understand the Farman, that is the ilmi miracle for you individually. Absolutely, yes. Inshallah, as you move forward, your understanding of the Faramin will grow because everything ilm is on darja by darja, step by step. Don't stop here. Understanding Imam's Farman are not easy, but at the same time, it's not impossible. Stay with those who has the ilm of the Imam, who understand the Farman, so you may have ilm of the Imam and understand the Farman. Ji. Okay, it's a request from the friend. Sir, can you please continue giving us ilm of Qiyamah every Sunday on this platform? Let me repeat what I said 2 minutes ago. If you want to learn more, enroll yourself in the higher classes. This is not the platform. Our journey of the Ilm Shanasi, Imam Shanasi ends here. If you want to learn more, you have to enroll in different classes. G. So there are no questions in the chat. Friends, you can unmute your device if you have any question. Okay, let's make a last comment, last question, whoever would like to take the advantage. Okay, Sir friend says, which classes? Yes, Kamra Sahib can help you with that. So if there are no more comments or question, then we can stop here. Kamra Sahib, do we have any other comments or question? No, sir, there are no questions. Only just friends asking which classes. So yeah, so I'm gonna put my phone number in there if they want to. Okay. Please. All right, so make a note of Kamra Sahib's phone number and get in touch with him. He will help you. Thank you so much. Thank you, everyone. Ya Ali Madad, Ya Ali Madad. या Yali madad sir, Maula Sukhi Salamat Abad Thank you. Rakhe. Ameen, Yali Ameen. madad, and thank you so much. يعلي مدد شكرا الحمد Shukra. Okay, Yali Thank madad you. sir. there will be Sunday classes, but not on this subject. Sunday classes will continue, but on different subject. The Imam Shanasi classes ends here. G. Otherwise, we will see you every Sunday with the different courses. G. Yali Madad, Yali Madad, Yali Madad, Yali Madad, Yali Madad. Thank you, sir. يعلي مدد Yali Madad, Yali Madad.